हेलो गाइस, वेलकम टू डगआउट डिस्कशंस। आज बात करेंगे एएफसी कप को लेके। मोहन बगान वर्सेस बेंगलुरु एफसी। काफ़ी एंटरटेनिंग मैच होने वाला है। मोहन बगान काफ़ी फेवरेट्स होके शुरू करने वाले हैं अपने एएफसी कप के अभियान। रोहित दा, कैसा लग रहा है मोहन बगान का स्क्वाड देख के? अभी अगर बोलोगे एएफसी कप का पहले अभी तक लाइक इट वोंट बी वेरी इजी टू कमेंट बिकॉज बहुत दिन हो गया बिकॉज अभी राइट नाउ जो फुटबॉल स्ट्रक्चर है इंडिया में इतना ज्यादा गैप हो रहा है ना, तो मेरे ख्याल से शायद कुछ डिफरेंसेस हो सकता है बिकॉज दिसंबर या जनवरी में आई गेस मार्च में लास्ट खेले थे हम लोग। उसका बाद जाके ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का एक गैप होके टीम वापस आ रहा है। बट देन अगेन जो न्यू एडिशंस हुआ है उससे टीम का बहुत हेल्प होने वाला है, स्पेशली द एडिशन ऑफ ह्यूगो बूमस। मिडफील्ड में उसका प्रेजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंस होने वाला है। एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से रॉय कृष्णा तो ऐसे भी रहेगा। रॉय कृष्णा हैज ऑलवेज बीन अ टावरिंग प्रेजेंस फॉर मोहन बगान, ठीक है। तो ये दो प्लेयर्स का ऊपर आग तो रहेगा ही, उसका साथ बाकी जो प्लेयर्स है, द एडिशन ऑफ लिस्टन कोलासो विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग देखे थे लास्ट टाइम जैसे राइट विंग में मनवीर सिंह वॉज दी प्राइम, बट इन द मैचेस जहां पे मनवीर सिंह खेल नहीं पाया वहां पे लिस्टन कोलासो विल बी कमिंग इन एक्सट्रीमली हैंडी बिकॉज लिस्टन कोलासो का ये हैबिट है कि वो कट इन करके जैसे लाइक ही ऑलमोस्ट रेप्लिकेट्स द स्टाइल ऑफ मनवीर. So I guess both will be on the similar scale. So even in case if Manveer is posted as a forward, then in that case, Liston Colasso can come down as a winger or as an attacking midfielder from the right as well. So मेरे ख्याल से this is actually a good squad. However, I personally believe that this is like most likely tomorrow's game won't be a challenge for Mohun Bagan because कल का जो game है Bengaluru FC, I know Bengaluru FC at one point in time they were like massive. They had this wonderful squad in their ranks and everything, but right now they have fallen from the grace. They were doing well, but right now they are not in that same stride that they used to be at one point in time. सो मेरे ख्याल से यही मैं कह सकता हूँ कि अभी जो होने वाला है लाइक दिस टुमारो का मैच में मोहन बगान विल हैव एन अपर हैंड साइकोलॉजिकली, और स्पेशली जो स्क्वाड है विद द प्रेजेंस ऑफ ह्यूगो बोमस एंड रॉय कृष्णा, मेरे ख्याल से कल का मैच आराम से जीत जाना चाहिए प्रोवाइडेड इफ बेंगलुरु डजंट कंज्यूर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिकॉज व्हेनेवर इट कम्स टू एएफसी कप Bengaluru FC has come up always with something special. And they are also performing nice, like the way they performed against Eagles. Jayesh Rane played a very crucial role in that game. In fact, he also scored that winning goal. तो मेरे ख्याल से यही रहेगा कि tomorrow's match will be very intense, very like it will be a good contest, but रिजल्ट मोहन बगान का फॉर्म में जाना चाहिए बिकॉज अभी तक जो टीम्स बेंगलुरु ने फेस किया है यहाँ तक दे हैव फेस्ड नेपाल आर्मी एंड दे हैव बीटन थ्रैश नेपाल आर्मी इन अप्रैल 5-0 एंड देन अगेन दे हैव फेस्ड ईगल्स यस्टरडे एंड दे हैव वॉन. तो मेरे ख्याल से कि एक द ओनली प्रॉब्लम दैट मोहन बगान विल हैव दैट दे आर आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस. They haven't played for a while now, so their last game was the ISL final, and post that this will be their first game. तो दैट विल बी द ओनली डिफरेंस बिकॉज एक चीज तो शायद सबको हम लोग को पता है कि यू नो लाइक व्हेन यू स्टे आउट ऑफ द मैच प्रैक्टिस फॉर अ व्हाइल it takes a lot of toll on you. Like it's not easy to instantly get into the groove. Like पहला मैच में थोड़ा बहुत रस्टीनेस रहता है, धीरे धीरे वो एंटायर कोऑर्डिनेशंस एक साथ होके वापस टीम स्टार्ट्स फॉलोइंग वेल. So that's all I can say. That most likely will be the only hold up for मोहन बगान. बट जो टीम है, जितना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स है, मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि यू नो दिस शुड बी अ चैलेंज. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर तो मोहन बगान का ग्रुप देखोगे, I guess Mohun Bagan already has an upper hand there because they have gotten the likes of Mazia and Basundhara. So Mohun Bagan has already, I guess, drawn with Mazia once and defeated Mazia once. So that result will also be going in Mohun Bagan's favor psychologically when this group advances. But tomorrow's game will be intense, if not closely contested. And if Mohun Bagan can manage to win tomorrow's game, I believe they are like you know like very much well en route to go ahead and you know finish in the top 2 of the group. Like it'll give them a massive psychological boost. That's all that I can say right now. ठीक है। शाग्निक, तुम्हारे फेवरेट संदेश झिंगन इस बार नहीं है, कितने डिसअपॉइंटेड हो? क्या बताया जाए, मतलब जैसे रामोस और वरान चला गया ना रियल मैड्रिड से, अपना लीडर एट द बैक संदीप झिंगन चला गया, बट ही हैज गॉन फॉर अ गुड कॉज. मतलब
ही इज प्लेइंग फॉर कौन सा एक फॉरेन स्क्वाड ने उसको बुलाया नहीं दिप्तान इफ आई एम Yeah, नॉट exactly. So रॉन्ग I am very happy about that move particularly because last time an Indian player went to Europe, that was Gurpreet Singh Sandhu, and now that he has returned, जब वो पहले खेलते थे सेबेक में खेलने का पहले जब ईस्ट बंगाल में खेलते थे, we have seen him conceding goals like forget the Indian team. वो ईस्ट बंगाल का फर्स्ट टीम में भी कभी कभी उसको मौका नहीं मिलता था, वो सेकंड बैकअप करके स्टार्ट होता था. उसका बाद when he made that switch, you know, that transformation helped him like anything. So similarly मेरे ख्याल से ये संदेश झिंगन के लिए एक बहुत बड़ा मौका रहेगा and you know like और ये इंडिया के लिए भी एक बहुत अच्छा साइन है because when that man comes back, मतलब any which ways I will go like unarguably he is the best defender for India in the last 2 decades, no doubt about that, like an absolute rock in the middle. But हाँ, when it comes to club level definitely हम लोग तो miss करेंगे ही उसको. But then I also believe that this will open up an opportunity for Sumit Rathi. Sumit Rathi has actually been a very good defender. Unfortunately, you know, like breaking the likes of Sandesh Jhingan and then Subhashish Bose and then Pritam Kotal, Terry in the middle, you know, it's very difficult to break such a pair. So now with Sandesh Jhingan got, Sumit Rathi will be getting a lot more opportunities. He was the emerging player of the 2020 ISL and he's a very exciting player. So I personally would love to see him perform. But again, nobody can fill in the void that has been left by Sandesh Jhingan because he's a massive man. Sandesh Jhingan is an absolute rock. चाहे वो अटैक हो चाहे वो मतलब you know like I will tell you one incident. I still remember जब इंडिया ने पहला बार खेला था कतार का साथ which ended up in a 0-0 draw. The last match as well, I don't know, like it was a bit unfortunate that we considered that one goal, and that too we played with one man down throughout that game. Okay, but जब last time जब ये you know संदेश झिंगन खेला था तो at that point in time Viking Thunder clap एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था. इट वाज जस्ट बिगिनिंग टू स्टार्ट इन दैट इंडियन रैंक्स. सो तब इंडिया ड्रॉ करने का बाद वाइकिंग क्लैप किया था विद द लिमिटेड नंबर ऑफ इंडियन सपोर्टर्स जो स्टेडियम में प्रेजेंट था. एंड आई स्टिल रिमेंबर संदेश झिंगन आफ्टर दैट वाइकिंग क्लैप he leaped up in the air and he punched the air. वो जो अग्रेशन था ना मेरे को वो इंडियन फुटबॉलर्स में बहुत कम दिखे. क्रिकेटर्स में ऐसे अग्रेशन मुझे हमेशा दिखता है जैसे विराट कोहली बोल दो, रोहित शर्मा बोलो, ऐसे अग्रेशन दिखते हैं. लेकिन वो इंडियन फुटबॉलर्स में ना वो अग्रेशन मुझे हमेशा दिखता नहीं है. वो अग्रेशन कहीं पे लैक होने का कारण मेरे ख्याल से इंडियन फुटबॉल हैज बीन ट्रेलिंग दीज मेनी डेज. बट दैट अग्रेशन दैट आई सॉ इन हिज आईज, दैट हंगर टू प्रूव हिमसेल्फ, I guess that means a lot. That is why Sandesh Jhingan is always going to be very, very special for any team that he plays. May it be for India, may it be for Mohun Bagan, may it be for any club. Like he is an amazing defender. यही मैं और दिप्तान इसी बारे में बात कर रहे थे कि मोहन बागान का इतना अच्छा प्रोजेक्ट है कि मोहन बागान इज लाइक द PSG ऑफ इंडियन फुटबॉल. किसको नहीं लिया बैक में. देयर इज अमरिंदर सिंह, अरिंदम, लोग तो छोड़ भी दे रहे हैं, सबको जाने भी दे रहे हैं. जैसे जयेश राणे को बोला जाओ बेटा जाओ, बेंगलुरु FC को छोड़ दिया, जॉबी डिस्किन को छोड़ दिया. इनफैक्ट हल्दर को भी बोल रहे हैं कि जमशेदपुर में एक र्यूमर उठा था और इनफैक्ट अभी भी है वो र्यूमर, अभी भी है. पता नहीं वो लैंड हो पाएगा नहीं, पर अगर वो लैंड होता है that will be the biggest signing for Indian football. Mohun Bagan still has eyes set on Mario Mandzukic. So अगर Mandzukic को लैंड कर सकता है मोहन बगान, no, as far as the latest report goes, like there are still words going on between him and Mandzukic. So पता नहीं क्या हो सकता है, but अगर वो signing होगा so that is going to be like a massive leap for Indian football. We have already, but again there is one thing that we would like to you know underline. पहले डेल पियरो भी आ चुका है and then Perez भी आ चुका है, but the thing is they were way out of their prime. But talking about Mario Mandzukic, maybe he is way out of his prime, but at the same time he is not as old as Del Piero or Robert Perez when they came. Mario Mandzukic is still regular in football, और जो stature Mandzukic लाते हैं अपने teams के लिए, what we have seen him doing for previous teams, I still know that if he comes down even at this age for Mohun Bagan, he can still go ahead and land a goal fest. लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि संदेश झिंगन के जाने के बाद
जॉनी काउ को कहीं पे मिस हो गए स्क्वाड से, इसीलिए कार्ल देखो मैक्यू को हमेशा, शायद लेके गए ये लोग। देखो जब नहीं तो शायद कार्ल जब मैक्यू नहीं पहले जाते, कार्ल मैक्यू शायद नहीं अ, जाते। शायद हम लोग पहले बार जब हम लोग आईएसएल खेले थे, तब हम लोग को लगा था जो बोरहा फर्नांडिस एंड आई नाटो फॉरगेटिंग द नेम नाटो ऑफ दिस प्लेयर, नाटो नाटो नाटो, ये नाटो दोनों नाटो का जो डिफेंसिव का जो पेयर, ये डिफेंसिव पेयर था बहुत सॉलिड था, इससे अच्छा कुछ पेयर हो नहीं सकता था। हम लोग सेकंड सीजन में जाके बोरहा को छोड़ दिया, तो फिर हम लोग को सबको लगा यार बोरहा को छोड़ दिया तो कैसे होगा, एंड एक्चुअली सेकंड सीजन में जाके वी लॉस्ट इन द सेमीफाइनल, बट वी प्लेड ए लाइक इनक्रेडिबल गेम। हम लोग का रीजन था सेमीफाइनल हारने का, बिकॉज that was ATK not Mohun Bagan, दैट वाज ATK एग्जैक्टली। या सो अगर हम लोग वो आईएसएल का अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पे भी अगर देखोगे वो जो पेयर था, तब of course we had our reasons because Helder Postiga was ruled out after the first game itself. Helder Postiga was our marquee player, so he got ruled out. So I guess it was Helder Postiga or Helder Costa, I'm not sure. I guess it was Postiga, right? Helder yes, Postiga. yes, So Postiga. सो द थिंग इज, देखो अगर हम लोग पुराने प्लेयर्स को, या फिर जो आई नो संजय सिंह इज एन एक्सट्रीमली एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, बट हमें नया प्लेयर्स भी निकालना है। जब बार्सिलोना ने रोनाल्डिनियो को छोड़ा था, तब उसे ये नहीं पता था कि मेसी ये हाइट तक पहुंच सकता है, उसे ये पता था कि मेसी वाज स्पेशल। बट अगेन देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू लेट गो ऑफ योर प्लेयर्स। जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को जाने दिया, उसका बाद क्या हम लाइक मैनचेस्टर को प्रीमियर लीग नहीं मिला था? ऑफ कोर्स मिला था, आरबीपी आया उसका जगह। The thing is, see, you have to understand that like a player cannot be bigger than the club, and at the same time Indian football is right now, so I still remember I guess it was Novi Kapadia or Debayan Sen who made in a commentary saying that Indian football is a sleeping giant and the giant is just starting right now. He's still not awake but he's starting. और ये सब बेबी स्टेप्स है ना, जहाँ पे संदेश जाके यूरोप में खेल रहा है, गुरप्रीत हैज गॉट दैट ट्रेनिंग फ्रॉम स्टेबिक एफसी एंड स्टिल ट्राइंग फॉर यूरोपियन क्लब्स। ये सब ट्रेनिंग बहुत हैंडी होने वाला है हम लोग के लिए, बिकॉज वो लोगों का फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, स्टाइल्स ऑफ प्रैक्टिस बोलो, और वो लोग का जो एक्सट्रीम कंडीशंस रहता है, ठीक है, वो एक्सट्रीम कंडीशंस इंडियंस को हेल्प करेगा बहुत, बिकॉज इंडिया में ज्यादा से ज्यादा तक इट्स वेरी हीटेड, राइट? सो एट दैट पॉइंट इन टाइम क्या होता है ना, व्हेन यू प्ले इन दैट हीटेड कंडीशन, कहीं पे जाके तुम्हें अपना लाइक फिजिकल एंड्योरेंस पे भी ध्यान देना पड़ता है। सो वहां पे भी फिजिकल एंड्योरेंस, सो लेट्स से इफ यू आर प्लेइंग इन अ वेरी हीटेड प्लेस, the energy that you will be able to keep for 60 minutes in a place which is relatively cooler, you will be able to keep that energy for 75 minutes. और वो जो 15 minutes तुम्हारा एक्स्ट्रा एनर्जी रह रहा है, वो 15 minutes में तुम दूसरे स्किल्स पे भी फोकस कर सकते हो rather than only focusing on your energy. Because टाइमिंग का कैलकुलेशन से ना तुम्हें अपना गेम को you have to cohere and position your game, because after a certain point in time that tiredness kicks in. तो मेरे ख्याल से ये जो संदेश जा रहे हैं, I know it is going to be a massive loss for Mohun Bagan, or in fact I understand Johnny Kauko का जो pair we thought that will be working out, that right now looks to be a far cry and it's not happening. But ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, हम लोग के पास अभी सीएफएल में शायद देख सकते हैं उनको और टीडी को। I still don't know, but I guess Mohun Bagan is going to field their reserve team, but मेरे ख्याल से शायद प्रवीर दास will be coming on for Mohun Bagan, and I guess even Kian Nasiri will be coming on. No, Kian Nasiri तो जा रहे हैं, AFC Cup चले गए। Oh sorry, Kian Nasiri is already in AFC Cup. So I guess कुछ young चले गए, लाइक आपके अभिषेक सूर्यवंशी, उसके बाद कियान इनफैक्ट विद्यानंद सिंह भी गया है टीम का साथ, which is another good thing. तो मेरे ख्याल से शायद ये लोग का जो रिजर्व या फिर एकेडमी टीम है, शायद वही उतारने वाला है कलकत्ता लीग के लिए, बट अभी तक तो पता नहीं है, फाइनल कंफर्मेशन कुछ आया नहीं है, तो आने दो, उसका बाद ही ओनली वीकेंड से अभिषेक सूर्यवंशी ये सब एफसी कप के लिए चले गए। अब देखते हैं क्या और होता है। और एक इम्पोर्टेंट प्लेयर भी है। आई एम सॉरी, कंटिन्यू कर। अगर आप देखोगे इस साल काफी मतलब मिडफील्डर्स लेके गए, मतलब एफसी कप के लिए, मतलब शायद हवास ट्राई करेंगे, काफी सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाले हैं, इसीलिए बहुत सारे अगर आप देखोगे स्क्वाड को तो बहुत सारे मिडफील्डर्स लेके गए हैं। एक चीज तो I will like to say out here, Habas in the first place, we all know that Habas is a defensive coach. I have not seen him attacking. He is someone who likes to soak in that attack and then hit back. And actually that strategy has been successful so far.
in most of the occasions. उन्होंने 2 ट्रॉफी जीता है, 1 फाइनल खेला है. So in fact even last ISL फाइनल भी मोहन बागान जीतने ही वाला था. लास्ट 4 मिनट में पूरा कैलकुलेशन चेंज हो गया. I mean not जीतने वाला था, but at least ड्रॉ चल रहा था और वहां पे जाके पूरा कैलकुलेशन चेंज हुआ. So that is something unfortunate. But मेरे ख्याल से मैं यही बोल सकता हूँ कि like जो तुमने बोला, शायद मोहन बागान अपना मिस्टेक से सीख रहे हैं. लास्ट टाइम मोहन बागान वाज डिफेंसिव एंड दैट वर्कड वेल बिकॉज मोहन बागान का जो डिफेंसिव पेयर था बहुत सॉलिड डिफेंसिव पेयर था. वो सेंटर में एंड साइड बैक्स, इट वाज अ वेरी गुड डिफेंसिव लाइनअप. बट कहीं पे जाके मोहन बागान का अटैक वाज एंटायरली बेस्ड ऑन रॉय कृष्णा. मनवीर वाज डूइंग वेल, but other than that Roy Krishna became the target man and he had to wait out there और सारे balls उसको deliver किया जा रहे थे and he was making those runs. but वो हमेशा possible नहीं है. मेरे ख्याल से ये इसीलिए शायद Hugo Boomers is going to be a very important factor this time. He is a pivotal midfielder and ever since he has been playing for in the ISL he has been absolutely sublime. और उसका साथ साथ they have even taken in the likes of we already have the likes of David Williams. We have now this time brought in Sheikh Sahil. Sheikh Sahil will most likely not be playing those many matches that he used to play for Mohun Bagan previously in the I League. But that guy is actually a rock in the defensive screen. He is one of the best screeners I have seen at such a young age. जितना workload लेता है ना बंदा, उसका साथ we have gotten the likes of Liston Colasso and Lenny Rodriguez. So both of them, if they can combine well, that will be a very dynamic midfield. So I guess they have learned from their last time's mistakes and they just do not want to focus on those counter attack. They want to create this time from the back, which is a good sign. I think लेनी पूरे 90 मिनट शायद नहीं खेलेंगे, तो देखते हैं क्या होता है. I guess लेनी के लिए वो 15 minutes ही enough है because लेनी is a shooter. तो अगर तुम लेनी को वो रेंज पे कहीं पे बॉल दिला सकते हो, he can let those thunderbolts fly. रोहित आपके मतलब प्लेइंग 11 क्या होने वाले, मतलब स्टार्टिंग 11 क्या होने वाले, कॉम्बिनेशंस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम मेरे ख्याल से शायद स्टार्टिंग गोल में it will be अमरिंदर सिंह. राइट बैक विल बी प्रीतम कोटाल. अमरिंदर सिंह या अरिंदम, ये भी एक बड़ा डिबेट है. जैसे I'll go for डोनारुमा और नवाज उधर है, हमारे पास भी अमरिंदर और I'll go for Arindam. I would have gone for Arindam, but the thing is, देखो Arindam is right now getting a bit old. Okay, like he's a very experienced goalkeeper, he's a wonderful goalkeeper, but when it comes to big matches, especially finals or knockouts, we have seen Arindam failing. And कहीं पे जाके उसका nerve का problem हो सकता है या फिर कुछ भी. But he is definitely one of the most experienced goalkeeper. I have been seeing him. So he is playing for ATK and ATK Mohun Bagan recently. But ever since I was a kid, he used to play for Mahindra United and he grew up since then. So I've been seeing Arindam for a long time now. So I know what kind of a goalkeeper he is. He is actually a very potent goalkeeper with a lot of caliber. But कहीं पे जाके मुझे लगता है age is catching up with him and his reflexes are getting slow. And on top of that, Amrinder is a national team goalkeeper. So he is regularly in practice and he is getting a lot more exposure than Arindam has. And we can't say that, Amrinder is not an experienced goalkeeper. He has also got a lot of experience under his belt. So that is why I would like to see Amrinder in the woodwork. However, there's a small shortcoming of Amrinder, and that is his outing is a bit scrappy. He at times misses out on his outings. But it's okay. I believe when you're playing at such a good level, it's all down to you. Given the fact that we all know that Bengaluru FC is someone who believes on playing the game from the sides. Most of their attacks come from the wings with the centers. So given the fact that Amrinder is a good shot stopper, that will really come in handy to snuff out those attacks. In the goal for me, it will be Amrinder Singh, of course. In the right back, as a right back for me, it will always be Pritam Kotal. In the center, it will be Sumit Rathi for me. And definitely it's going to be Carl Mathew and the other center back. And on the left, it's going to be Subhashish Bose. In the midfield, on the right, it will be Manveer Singh. And then most likely I'll be going for Liston Colasso and Lenny Rodriguez together in the mid. And then David, or if not, so Liston I won't be starting, I'm sorry.
I'll be definitely sorry, listen, I will be starting. Lenny, I won't be. I'll be putting in David Williams in the middle. And then on the left somewhere, now this is a very this is a very debatable question for me, but again at the same time, maybe I'll be shuffling between Hugo Boomers and David Williams on the wing. So David Williams has got some experience to play down the left. In that case, Hugo operates very well in the center. So, or if in case he's not able to do that, we can shuffle the ranks. And then at the top of the squad, we will definitely have the likes of Roy Krishna coming up. And most likely, Lenny will be coming up as a second half. I would love to see Vidyananda Singh starting because he's a very fast player and he has the shots at his range. Now coming to Bengaluru, again in the goal, they definitely have a stalwart in Gurpreet Singh Sandhu. No question about that. Alongside that, most likely, even if you would look at, they have gotten the likes of Jayesh Rane, they have gotten the likes of Danish Bhatt, and they have exactly, and they have the likes of Sunil Chhetri up front. Now, Sunil Chhetri is not that successful for a club level football team like the way he has been for the national team. But at the same time, we are all aware of the fact if Sunil Chhetri clicks, that probably will mean a destruction for a lot of teams. Another important name for Bengaluru FC will be Udanta Singh. Udanta Singh is an absolute dynamite on the right, and the speed that he carries, at his disposal, I mean, that is absolutely sensational. I would love to see Udanta Singh flying again. So these are a few players whom to watch out for. But at the same time, like the way Udanta Singh flies down the right, we have someone called Subhashish Bose for Mohun Bagan. So it's gonna be a very, कांटे का टक्कर होने वाले है दोनों में. And at the same time, Sunil Chhetri will be up against most likely Sumit Rathi and Carl Mathew. Now, Carl Mathew, he is not the final man. Most likely, Sumit will be playing the final man because of his stature. Carl Mathew is like, he depends on his daily routine. कोई एक दिन अगर बंदा क्लिक कर गया, he is even better than Chiellini and Bonucci. एंड जिस दिन बंदा को फेल करना है यार, स्कूल डिफेंडर्स भी उससे अच्छा खेलते हैं. ऐसा है कार्ल मैथ्यू. बट लेट्स जस्ट होप दैट ही इज एबल टू कंटेन द थ्रेट ऑफ सुनील छेत्री, because I am very much aware and we all are aware that if Sunil Chhetri goes on to click, that can be really dangerous. Talking about the Bengaluru defense, they have got the likes of Sarthak Golui, they have got the likes of Suresh Singh as well. Now Suresh not exactly is a defender, he drops down from the wings at times to defend, so he has got immense energy and endurance and resilience up his sleeve, so that will be another plus point. So another important name for Bengaluru will be Ashik Kurunia. Ashik has been playing a very crucial role for Igor Stimac in the Indian national team, but let's just hope he carries on with the same momentum for Bengaluru. But once again, with all said and done, I believe Mohun Bagan has got a fair bit of psychological advantage coming to the ground. But once again, once you're there on the ground, no history, no words, no piece of statistic can come to you, can come to your deliverance if you're not playing well. अच्छा शागनिक, तुम्हें क्या लग रहा है कि किसका पल्ला भारी है? Obviously, I'll go for ATK Mohun Bagan because उन लोग का तुम ऐसे देखो, उन लोग का प्रोजेक्ट देखो, they're signing very good players and they actually have a vision कि क्या करना है. Like I have seen AFC Cup जहाँ पे teams like East Bengal and Mohun Bagan were getting sacked by Asian teams 5-1, 6-1 at the goal lines में. And if you see this time our teams like Bengaluru FC and ATK Mohun Bagan, they're very strong squads in their own league as well as a like Asian tournament like AFC Cup. So I think both of the teams have a great chance to qualify, but obviously Mohun Bagan because see the depth of the squad. There's this one thing that I'd like to mention. Whenever it comes to AFC Cup, Bengaluru FC is really a strong team. I mean, they perform outside, like beyond their league. They punch a lot above their weight and they perform phenomenally good. So I personally believe that is something that will make Mohun. मुझे भी लग रहा है कि मोहन बगान का पल्ला थोड़ा भारी है. अब देखते हैं कल क्या होता है. अब देखना पड़ेगा कि किसका देखना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली मतलब साइनिंग्स बेटर हो के भी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डे. कई ऐसे हो जाता है कभी सिंह. नाउ सिंस मोहन
बगान इज ओवरटली रिलायबल ऑन रॉय कृष्णा टू स्कोर। वो जो फैक्टर है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या होता है कभी कभी रॉय कृष्णा मार्क्ड, बट द स्पीड दैट रॉय कृष्णा हैज अप हिज स्लीव्स, दैट इज व्हाट हेल्प्स हिम टू ब्रेक फ्री। बट देखो, एक ह्यूमन बीइंग कैन मैच, यू डोंट नो व्हेन इज ही गोइंग टू फेल। नाउ अगर एक प्लेयर जाके फ्लॉप किए, you will have to bring up the other players. Now we have seen Manveer performing really well for Mohun Bagan, so I just hope that वो फैक्टर काम कर जाए कि एटलीस्ट एक दो अटैकर जाके परफॉर्म कर पाए मोहन बगान के लिए। बस अभी मोहन बगान लेके उतना मैं बोल रहा था कि अभी मोहन बगान लेके उतना नहीं लग रहा है। लाइक व्हेन प्लेयर्स लाइक बैरेटो एंड ओडाफा एंड सोनी वर प्लेइंग, वी यूज्ड टू हैव सो मच एक्साइटमेंट वाचिंग दिस प्लेयर्स। अभी कैसा लग रहा है? लाइक इवन बीइंग अ पर्सन हु इज इन फेवर ऑफ मोहन बगान, आई एम सेइंग अभी उतना कितना सही नहीं लग रहा है। वी आर नॉट एक्साइटेड सो मच गेम। आई गेस शाग्निक, इसके लिए शायद हम लोग को एक कंप्लीटली डिफरेंट एपिसोड करना है, बिकॉज हम कहीं पे जाके तुम जो अभी बोले इसके ये तक पहुंचने के लिए, ये रूट कॉज तक पहुंचने के लिए ना, हम लोगों को इंडियन फुटबॉल को डाइसेक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू डाइसेक्ट इट डाउन टू दैट ग्राउंड रूट जीरो लेवल पे जाके हम लोग को वो डाइसेक्ट करना है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि वो इमोशन नहीं आता है, वो क्रेज नहीं है। अब वो क्रेज नहीं होने का दो रीजंस और हो सकते हैं। दैट इज वन ऑफ देम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट बीन टू अ ग्राउंड टू वॉच मोहन बगान ईस्ट बंगाल प्लेइंग, वो जो, और या फिर इवन टू मोहन बगान प्ले आउट ऑन देयर ग्राउंड। अच्छा, तो मेरे ख्याल से शाग्निक ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज देखो कहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी प्ले कर रहा है पैंडेमिक। The fact that we have not been able to go to the grounds, वहां पे भी जाके कहीं पे वो जो वो जो इमोशन है, वो इमोशन कहीं पे जाके रुक जाता है। ठीक है, सो आई बिलीव दैट इज प्लेइंग अनदर मेजर फैक्टर। और एक चीज इंपॉर्टेंट देखो, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। द नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स दैट मोहन बगान और ईस्ट बंगाल previously used to play, all of them have been shut down right now, most of them. तो शायद वहां पे भी जाके कुछ है। तो लाइक आई सेड, ऐसे डायरेक्टली एक छोटा सा सेंटेंस में हम लोग तो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एक entire most likely will be one episode for you guys, like it should be dissected right until the very core कि कहां पे क्या हो। आई बिलीव अगर इंडिया को और आगे बढ़े, one can define the entire league structure. There has to be more than one league, there has to be more than one competition, there needs to be, in the first place there needs to be something for relegations. So अगर ये सब लाभ सकते हैं तभी जाके ये बहुत सारा चेंजेस होने वाला है। Another important factor, another major factor is players of Indian origin. बहुत ऐसे अच्छा इंडियन प्लेयर्स है जो शायद अभी इंडिया में नहीं खेल पा रहे बिकॉज ऑफ इट्स सिटीजनशिप लॉज, बट देन अगेन वी कैनॉट, एग्जैक्टली वी कैनॉट टॉक अबाउट दैट। हम लोग देखते हैं कि दूसरे कंट्रीज के प्लेयर्स जैसे ओरिजिन होके भी खेल सकते हैं, कतर के बारे में बात कर सकते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट कतार यार, लाइक अगर हम डिएगो कोस्टा को भी देखेंगे, डिएगो कोस्टा इज प्लेइंग फॉर स्पेन, सो लॉट ऑफ प्लेयर्स आर आउट देयर। Exactly, so there's a lot of players out there, like changes can happen, but right now I don't think we have the right resources to talk about this. So most likely ये सब fans के लिए है कि हम entire Indian football का internal जितना भी structures is available out there for everyone to know, will compile it, will bring it to you on one single episode, telling you कि शाग्निक ने वो कितना relevant है। आई वोंट अग्री विद शाग्निक की वो इमोशनल नहीं है, बिकॉज देखो जो क्लब्स हम लोग मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, वी कंसिडर देम ऑलमोस्ट एज इक्विवेलेंट फॉर मदर्स. So like your emotion for your mother cannot change. Maybe there can be times when you will not have that same bond with your mother, you may be angry on your mother, but at the same time your love for your not. But हाँ, जो surroundings हो रहे हैं, जो situations अभी है, जो current form of the game structure है, कहीं पे जाके वो लैक, but then don't worry, we'll definitely pick this up for you all. ठीक है, आज शो एंड करने का समय हो गया है दोस्तों। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। इंडियन टीम्स फॉर द AFC कप, ऑल द बेस्ट। जो भी जीते बेंगलुरु FC या ATK मोहन बगान,
इंडिया का टीम रिप्रेजेंट करा, ये बहुत बड़ी बात है। बॉल ठीक है, एक चीज एड्रेस करना था गाइस कि हम लोग का व्यूज में, तो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो डू वॉच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई प्लीज देख ले प्लीज हम लोग तो वीडियो। और ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा, प्लीज कॉल करके बताना या मैसेज करके बताना कैसा लगा वीडियो है। हाँ प्लीज यार, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छे कंटेंट्स लाके दे रहे हैं, तो अगर प्लीज आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक कीजिए और कीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है दोस्तों, तो करिए ना। तो ठीक है, चलिए गुड नाइट, अब सोने जाने का टाइम हो गया, शटर नमाओ। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel